you have a placement drive, and there you get the GD, the job description. And the job description clearly states that out of the 4 rounds, there is one round wherein you have to appear for a group discussion. One instance. Second instance, I have done my graduation and now I have a dream that I'm going to take admission into a big B school, MBA college. Okay. I'm very good at aptitude. I'm very good at my English. I'm very good at everything. So I know I will be able to clear my written round. Hey, there will be one group discussion as well. Don't you know? Group discussion, second instance. So if you are among any of these instances, or let's say if you are not even among these instances, but GD is something which is still petrifying you, then I must say that you are at the right place. Because in today's session, we will get to know everything about a GD, what a GD is, why it is conducted, what are the types of GD, and what is that one approach that you need to follow in order to win that GD. Yes, so hi, my name is Nandita and I am your verbal ability and soft skills trainer. So by now, आपने पता लगा लिया होगा कि what is the topic for the day. Yes, the topic for the day is group discussion. I know this is one of the most common words that you often hear from your personality development trainers or from your teachers जब आपके रिक्रूटमेंट का टाइम आता है, राइट? तो भाई क्या है ये GDN, क्यों इतना परेशान कर रखा है, एंड व्हाई आर वी आस्क्ड टू बी अ पार्ट ऑफ द GD? क्या हम बिना GD के हम क्या अपनी रिक्रूटमेंट ड्राइव में नहीं जा सकते हैं? व्हाट इज द यूज, व्हाट इज द पर्पस? सारे आंसर्स आपको मिलेंगे. सो जस्ट stay in this video till the end. I know that every minute of this video will be worth for you. So very quickly, let's see that what is the objective, learning objective for the day. So students, if you are going to stay with me till the last, you will get to know that of course क्या है GD आपको पता है, but मैं फिर से बताऊंगी. Then why a GD is conducted? भाई नीड क्या है? अच्छा ठीक है, सर ने बता दिया, प्लेसमेंट सर ने बता दिया, मैम ने बता दिया कि GD कंडक्ट होगा भाई आपकी प्लेसमेंट ड्राइव में, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड. Of course, we ask question to ourselves why this GD is there. क्या नीड है इस GD को कंडक्ट करने के लिए? So that also we will get to know. Plus you will know that what are the types of GD. Yes, GD के भी टाइप है. आपको पता चलेगा कि कौन कौन से टाइप के GD होते हैं और आपको कौन से GD मिल सकते हैं. Right? So that you know that अच्छा you have to be prepared with everything. Then of course वो चीज इसका आप वेट कर रहे हो. We will be using a prep approach to know how to win a GD, right? Okay. So सबसे पहले बात करते हैं what is a group discussion. So group discussion is a kind of psychometric test. जहां पर भी psycho आता है, which means that something which is related to your mind. बहुत सारे psychometric टेस्ट आपने सुने होंगे that there is a picture perception test, there are other tests as well. Then GD भी उसका ही एक हिस्सा है. It is also a kind of psychometric test because this particular test is used to measure your mental capability. ठीक है, आपने अपनी कोर्स की सारी बुक्स पढ़ लिए, ठीक है, आपने अच्छे नंबर लिया है, but that does that tells कि भाई आप mentally भी उतने mature हो चुके हो? Yes. So in order to check this particular thing, in order to check your mental capability, that how mature, how well you can think, ये एक साइकोमेट्रिक टेस्ट है जिसका नाम है ग्रुप डिस्कशन. ये रखा जाता है, राइट? एंड ये ग्रुप डिस्कशन आपकी रिक्रूटमेंट ड्राइव्स का पार्ट होता है. आप कई बार गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी ये आपको दिया जा सकता है, स्पेशली व्हेन यू गो फॉर SSB or NDA, right? Plus if you want to get admission to some B school, वहां पर भी this one psychometric test is kept. Now of course a question might be budding in your mind कि क्यों यही टेस्ट क्यों रखा जाता है टू चेक आवर मेंटल कैपेबिलिटी. सो लेट मी गिव यू एन आंसर फॉर दैट. Okay, so this is the reason why companies conduct a GD for you. Because GD में ऐसा नहीं है सिर्फ आपकी communication skill पता चल रही है. These all qualities, these all inner traits of yours are actually tested when you appear for a group discussion. For example, politeness. How polite you are. वो आपकी जब आप डिस्कशन करोगे ना GD में, जब आप GD में होगे उससे पता चल जाता है. And of course
आप बोलोगे, आप तभी बोल पाओगे when you have enough knowledge. So your knowledge, your flexibility, your presence of mind. वहां पर ऐसा नहीं कि आपने कोई आंसर लर्न करके गए हो एंड देन यू हैव टू जस्ट गिव दैट आंसर. ऐसा कुछ भी नहीं है. Somebody is going to speak some point, and of course you have to make use of your presence of mind in order to answer that question, right? So ये भी सारी चीजें चेक होती हैं. Plus of course communication, how well you are at communicating. And again students, I'm saying when I say communication, I simply do not mean English. Communication comprises of how good listener you are and how good speaker you are. So it is actually a combination of both the things. गुड लिसनर एज वेल एज गुड स्पीकर. जब आपके पास ये दोनों चीजें होंगी, ओनली देन यू आर कॉल्ड अ गुड कम्युनिकेटर, राइट? देन ऑफ कोर्स कंपैटिबिलिटी इन अ ग्रुप. आप ग्रुप के साथ डिस्कस कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको ही बोल रहे हो एंड अदर्स आर कीपिंग क्वाइट, और यू आर नॉट लेटिंग एनीवन टू स्पीक. So this is also being tested in a group discussion, that how good you are at listening to other person's point, and at the same point how nicely you are able to present your point. Yes. Then of course motivational skills are being tested, because जब आप एक जीडी का हिस्सा होते हो, राइट, तो यहाँ पर ये भी देखा जाता है कि डू यू हैव दैट क्वालिटी दैट यू आर मोटिवेटिंग सम other member of the group who is actually not speaking, or who is actually not able to speak at that point of time. So these things are also checked. Apart from that, yes, leadership quality, whether you are able to control over your aggression or anger. At times purposely they are going to give you such a topic जिससे आपको गुस्सा आ रहा है, and purposely they are doing that, right? And at that point of time you have to show that yes, you know how to manage your anger, you know how to manage your aggression. Then of course convincing skills. So if I am in a discussion, of course some other will have some other point and I might have a contrasting point. Do I have that quality to convince the other person that matters, and that will be reflected when I will be a part of the discussion. Then presentation. जब भी आप बोल रहे हो, for example I am speaking, what I am doing, I am actually giving a presentation, right? So आपकी presentation skill भी उस time पर नजर आती हैं. Confidence, interpersonal skills and judgment. So these all traits, these all inner traits of yours are actually checked in a GD. So I believe अब आपको समझ आ गया होगा that why GD is conducted for recruitment drives, or for MBA, or for NDA, or for HSB. Because आपके written में तो सिर्फ वो वही check कर पाते हैं जो आपने पढ़ा हुआ होता है. These inner traits of yours are actually checked while you are a part of a group discussion. And apart from that, there is one more reason. It is actually used as an elimination round. So let's say एक recruitment drive में there are 500 students, right? They appeared for the written test, and let's say 300 of them have cleared it. Now, do you think that it is possible to interview all 300 candidates? It is actually not, right? So here they conduct a round of group discussion which will act as an elimination round. अब 300 students हैं, उन्होंने groups बना दिए. Group बनाकर they have given one topic, and then they are going to check these traits in the students, and accordingly they are going to shortlist the students. Now the students which are shortlisted, they are going to go for further rounds, wherein they will go for technical interview, or they might go for a personal interview. So GD is also conducted because they have to eliminate the candidates. They have to shortlist the candidates. Right now, we all know why a GD is conducted. So let's go further. Let's go to another slide and learn more about a discussion. Okay, now what is the criteria of conducting a group discussion? So students, usually what happens in a GD, you will have like 8 to 10 members, or you will have 10 to 12 members, or max to max you will have 15 members, not more than that, right? That depends, like that depends actually, that actually depends on the number of candidates. But in a group discussion you will never ever find more than 15 candidates. Reason is because the person who is observing the candidates, if there are more candidates, of course it will not be possible to observe each candidate and judge the qualities that they are looking for. So they'll keep a less number of 15, that would be the highest maximum, and minimum is 8. And then they are going to conduct the discussion.
and they will observe the traits that we have discussed just now. Apart from that, the timing of a group discussion is 20 to 25 minutes, right? So this much time is actually needed to observe each candidate, like what kind of opinion they come with, or what kind of points they come with, or what kind of supporting details they come with. So of course one will take around 20 to 25 minutes to judge those candidates. Then number of topics, so obviously one topic would be given at a time. So let's say 10 students are there, so I'm going to give one topic, and topic will always be such wherein people will have different opinion. All right, some will be for the topic, some will be against the topic. So obviously this kind of topic is given so that a discussion could be done. They are never going to give such a topic wherein everybody goes on one side. This will usually never happen. All right. Then, of course, this particular everything is done in order to shortlist the candidates. So, once the candidates are shortlisted, and the candidates who are shortlisted are the ones who are speaking well, who are able to balance themselves, who know how to be a part of the group, who know how to motivate others, who reflect leadership skill, and who have good convincing skills. So, based on the traits that we have discussed earlier, shortlisting of candidates would be done. So I believe this much is clear with you all, that why GD is conducted and what is the criteria of conducting the GD, right? Now let's move further. Okay. Now we are going to discuss something important. I know that if you do not know this thing, it's not that you won't be able to clear a GD, but it is very important to know everything so that it becomes easy for you, that what kind of topic is given and what kind of topics are we supposed to prepare according to our placement drives. Yes. So broadly, there are three types of GD. One is controversial, another is factual, and third is abstract. So we will see what these type of GDs are and what type of questions can we expect if like one of these type of GD comes, right? So first one, as the name itself suggests, controversial. वो ऐसा टॉपिक जिसके पीछे कंट्रोवर्सी हो, ठीक है, कुछ लोगों का कुछ मत हो, कुछ लोगों का कुछ मत हो. So that becomes a topic of controversy. So you can very well see the poster is of the movie named The Kerala Story. So you might be knowing कि जैसे ही केरला स्टोरी मूवी आई तो बहुत सारे लोगों की अलग अलग ओपिनियन थी. Some people were saying no, this movie should not, this movie should be banned, as it is going to generate hate among people. ठीक है, कुछ लोग कह रहे थे no, it is really important to show such kind of movie in order to educate people that how they should be and what kind of friends they should make or what kind of environment they should be in. So ऐसे बहुत सारी चीजें आई थी. कुछ जगह ये इस मूवी पर बैन लग गया था, कुछ जगह इसको टैक्स फ्री कर दिया गया. ऑल इन ऑल ये मूवी एक कॉन्ट्रोवर्शियल मूवी थी, राइट? सो कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक्स आर दोज टॉपिक्स जिसके पीछे कुछ लोगों की अलग राय हो, कुछ लोगों की अलग राय हो, और वो एक कंट्रोवर्सी का पार्ट बन गया हो, जिसकी बहुत ज्यादा चर्चा हो रही हो. ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल, should movies like the Kerala story shown in school or colleges? तो अगर आपको इस तरह का टॉपिक मिला है तो वो एक कंट्रोवर्शियल जीडी का टॉपिक है, वो एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, बिकॉज ऐसे टॉपिक्स में हर इंसान के अलग बिलीव्स, एथिक्स, प्रिंसिपल्स आते हैं. कुछ के अलग होते हैं, कुछ के अलग होते हैं. सो एवरीबडी विल हैव सम डिफरेंट ओपिनियन बेस्ड ऑन दैट. तो इस तरह के टॉपिक्स दिए जाते हैं, और जब इस तरह के टॉपिक्स दिए जाते हैं, देन दे आर एक्सपेक्टिंग दैट द क्राउड इज गोइंग टू गेट एग्रेसिव. So here you do not have to use your aggressiveness. Rather, you have to take the topic as a topic. Do not get connected to the topic, and just think that we have to discuss on this topic and we have to come to a solution that what should be done. That should be our main motto. ठीक है. सो जनरली यंगस्टर्स को इस तरह के टॉपिक्स दिए जाते हैं सो दैट दे कैन चेक कि अच्छा थोड़ी सी चीज में क्या इनको बहुत गुस्सा आ सकता है कि नहीं आ सकता है. सो सच काइंड ऑफ थिंग्स आर टेस्टेड बाय गिविंग सच काइंड ऑफ टॉपिक्स. आपको रिलीजन के कुछ टॉपिक्स दे सकते हैं, एंड पीपल आर यूजुअली कुछ ऐसा रिलीजियस टॉपिक आ जाता है, so people are not able to control over their emotions. And students, if ever you get such kind of things, just
remember one thing in mind, that this topic is given on purpose. So you do not have to serve their purpose. You need to remember what was told to you, that you need to stay calm, you need to stay polite. Just take the topic as a topic. Do not get uh, carried away with the topic. Okay. Then my next topic is factual. Factual, जैसे कि नाम बता रहा है, which is entirely purely based on facts, numbers, dates, events, figures and etc. तो इस तरह के टॉपिक आपको दिए जा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इज द कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आजकल का, और हमेशा का रहेगा और पहले भी था. तो क्या अनएम्प्लॉयमेंट का मेन कारण इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है? कुछ लोग कहेंगे ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है. देयर आर अदर फैक्टर्स एज वेल. कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली पीपल आर नॉट एबल टू गेट द जॉब. सो अगेन इट बिकम्स अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन. पर जैसे मैंने कहा, दिस इज एक्चुअली बेस्ड ऑन हैपनिंग्स, फिगर्स, डेट्स, इवेंट्स, नेम एंड अदर थिंग्स. तो यू नीड टू मेक श्योर कि जब आप इस पर डिस्कशन कर रहे हैं तो आप जो भी पॉइंट रख रहे हैं, आपके पास proper चाहिए. Whatever you are saying, try to support it with the help of figures and numbers. Only then you will be able to make your point strong. ठीक है. एंड एज आई ऑलरेडी से कि कभी भी आप कुछ भी डिस्कशन कर रहे हो, वेदर आप एक जीडी कर रहे हो और इवन इफ यू आर टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स, राइट, यू आर टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स, यू आर टॉकिंग टू योर रिलेटिव्स एंड वहां पर डिस्कशन हो रहा है, you can only and only master a discussion when you have knowledge. And how will you get knowledge? One simple thing, I always ask students to read newspaper. The more you are into reading, you will get to know that what's happening around, what is the fact, what is the number, what is the date. सारी चीजें आपको पता चलेंगी. और अपना पॉइंट हम किसी के सामने तब भी प्रूव कर सकते हैं जब हम ये सारी चीजें किसी के सामने रखें. आई हैव टू प्रूव और आई हैव टू मेक कि नहीं, दिस इज नॉट द राइट थिंग और वट एवर आई एम सेइंग इज राइट. तो मैं उसको किस तरह से बता सकती हूँ? मैंने किसी के सामने 10 नंबर रख दिए, 10 फिगर्स रख दिए, फैक्ट बता दिया. ऑफ कोर्स नाउ माय पॉइंट विल बिकम मोर स्ट्रांग. तो ये सब कैसे होगा? Until or unless you become habitual to newspaper, it will not happen. And it will not happen immediately. It will happen gradually. I know, अगर आप से आज न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, you are not going to read it. That is actually not give you any sort of interest. पर हमें ये चीज बनानी है, बिकॉज वी नो कि अगर हमें कमांड लानी है अपने फैक्ट्स पर तो हमें न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो हमें ये सारी चीजें पता चलेंगी. प्लस इफ यू आर स्ट्रगलिंग विथ योर इंग्लिश, that is going to actually aid you, that is actually going to help you. So inculcate this habit from now onwards. If not, ओके, नाउ ये मेरा सबसे अलग है abstract टॉपिक. अब एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक में क्या है, उसको कोई मतलब नहीं, किसी फैक्ट से मतलब नहीं है, किसी कंट्रोवर्सी से मतलब नहीं है, ऐसे ही आपको कोई टॉपिक दे दिया and then they want to see that how deeply you can think about it and what all points you can present. So as it said that it is purely based on philosophical, intellectual or logical interpretation. जैसे आपको एक टॉपिक दे दिया गया, पिंक वर्सेस ब्लू. ठीक है, अब ऑफ कोर्स पिंक इज अ कलर, ब्लू इज अ कलर. ठीक है, इसके आगे पीछे उन्होंने कुछ नहीं बताया है, but they want to check that what all points you can generate if such topic is given to you, that how deeply you can dig into the topic. So of course pink is a color which represents girls or females and blue is a color that represents males or boys. So आप इस तरह से उसको टॉपिक को ड्रैग कर सकते हो, उसको ले जा सकते हो. So this is how abstract topics are given. और ये generally इसीलिए दिए जाते हैं because they want to check that how intellectual you are, कि आप कितना आगे तक सोच सकते हो या आप कितनी गहराई में सोच सकते हो और किस तरह से अपने पॉइंट्स प्रेजेंट कर सकते हो. तो सच टॉपिक्स आर ऑलवेज गिवन जहां पर आप उनको कोई मतलब नहीं है whether you are very much updated with the news or not. They'll simply give you this kind of topic and then they will see that what point you come up with. उससे भी आपका मेंटल लेवल काफी पता चलता है. ठीक है, अगर आप सिर्फ इसको एज अ कलर देख रहे हो तो अलग बात है, बट what else you can connect this to, that matters a lot. ठीक है, सो आई बिलीव तीनों टाइप के टॉपिक्स क्लियर है एंड आई विल नॉट से कि केवल आपको ये टॉपिक मिल सकता है ये या ये. आपको
सारे टॉपिक्स में आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए. यू नीड टू गो थ्रू एवरी काइंड ऑफ टॉपिक बिकॉज यू कैन एक्सपेक्ट फॉर एनीथिंग. ठीक है, यू शुड एक्चुअली एक्सपेक्ट फॉर एनीथिंग. वो आपको कुछ भी दे सकते हैं, इसमें कुछ प्री डिसाइडेड नहीं होता है कि अच्छा आजकल ट्रेंड में यही टॉपिक चल रहे हैं तो आपको यही टॉपिक मिलेगा. द आइडिया इज whatever is given to you, you have to discuss. You have to show that all these skills that we are looking for, whether you have those skills or not. Okay. Okay. Now, yes, comes something that you were actually looking for. How to prepare a GD. So, unlike other things, like whenever I talk about extempore or whenever I talk about elocution, okay, I always suggest one thing. या फिर अगर आप कोई ऐसे भी लिख रहे हो, so everything should have a particular pattern. And the pattern says कि अगर वो मुझे एक लॉजिकल सीक्वेंस में दिया गया है, only then I am going to understand the things well. तो लॉजिकल सीक्वेंस क्या कहता है? Whatever I am going to discuss on, it should have an introduction, it should have a body, and it should have a conclusion. तो ये मेरा एक लॉजिकल सीक्वेंस है किसी भी चीज का, चाहे वो मैं एक्सटेम्परे करूं, चाहे मैं एलोक्यूशन करूं, या फिर मैं एक जीडी कर रही हूं, या फिर मैं कोई ऐसे राइटिंग कर रही हूं. इफ यू आर फॉलोइंग दिस थिंग, only then you will be able to explain your point well, you will be able to start well, and you will be able to finish off well. ठीक है? So these are the three parts that you have to follow in a discussion. Now let's see what is there. Okay, so introduction as the name itself suggests, you are telling the other people, you are actually introducing the topic. Introducing the topic का मतलब है whatever topic is there, it is you who have taken the initiative to explain the topic to the other members of the group, and you give your opinion, followed by you give an invitation to the other members to be a part of your group. So this will fall under introduction. So again, I'm repeating how you're supposed to introduce a topic. First of all, you will introduce yourself that good morning everybody, I'm candidate number one, or if they allow you to speak your name, you can say good morning everybody. Good morning everybody, I am Nandita, and today we are here to discuss on so and so topic. Then you will explain the topic in your own words in one or two lines. All right. This is done because there are many people who must have not understood the topic. So you are doing a good thing. You are explaining the topic to them, and then you give your opinion whether you are for the topic or you are against the topic. Just give your opinion in one line, and then invite the other members. That now I would like to invite rest of the members to come forward and give their opinion on the same, and let's have a healthy discussion. Okay, now your role is done. Always and always a person who who initiates the discussion is given more points, but make sure that you start or initiate the discussion only and only when you know about the topic. आपको टॉपिक के बारे में नहीं पता है, so please do not initiate the discussion, because अगर आपने कुछ गलत बताया, for that you will get negative marks. So अगर नहीं पता है, so it's better let's listen to everybody, get some idea, and then we can give our opinion. ठीक है, लेकिन अगर आपको पता है, so it acts as a very good tool. ये एक लीडरशिप आपकी स्किल भी दिखाता है, that you are explaining the topic, you are guiding everybody, you are inviting everybody, and the discussion is being initiated. ठीक है? Okay. After discussion, we have body. Okay. Now, body is something which is very important. हमारी body बहुत important है, right? तो हमें देखना है कि whatever body, like whatever content part you are going to speak, उसमें क्या बोलना है. ठीक है, तो अब ऐसा नहीं है कि आई हैव स्टार्टेड एंड नाउ आई एम कंटिन्यूइंग, या फिर कोई और बोल रहा है तो आई कैन स्पीक एनीथिंग. नहीं, आपको यू डू नॉट हैव टू स्पीक एनीथिंग इन एवरीथिंग. यू हैव टू स्पीक इन अ वेरी कैलकुलेटेड मैनर. यू हैव टू मेजर वॉट एवर यू आर स्पीकिंग. ठीक है, तो अगर बॉडी की बात करें, सो वी नीड टू फोकस ऑन फोर थिंग्स. वन इज फीचर्स. की फीचर्स कुछ भी हो सकता है कि उसके बेनिफिट्स क्या है, उसके डिसएडवांटेजेस क्या है, ठीक है, या उसके कॉजेस क्या हैं, कुछ भी हो सकता है, या उसके टाइप्स क्या हैं, वो फीचर हो सकता है किसी भी तरह का डिस्कशन का. ठीक है, उसके बाद कॉजेस में आता है वेयर इन वी पे अटेंशन टू इट्स रीजन. सपोज आपका टॉपिक है रिलेटेड टू पोल्यूशन. ठीक है, आपने बता दिया कि पोल्यूशन क्या है. ठीक है, उसके बाद ऑफ कोर्स others will like to listen कि अगर pollution है that is fine, cause क्या है pollution का, so we need to discuss those things as well. What are those things, what are those elements which are causing pollution in the environment?
So until or unless we discuss those causes, things will not work, राइट। कॉज के बाद अब हम बात करेंगे इफेक्ट की, कि अगर पोल्यूशन हो रहा है, हमने जान लिया कि पोल्यूशन अच्छा इसके वजह से हो रहा है, ठीक है। जो व्हीकल्स का स्मोक निकल रहा है, टैनरीज का, इंडस्ट्रीज का जो स्मोक जनरेट हो रहा है, उसकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। कॉजेज भी पता चल गए। उसके बाद इफेक्ट्स क्या है, कि हाउ दैट थिंग इज हार्मिंग आवर एनवायरमेंट, वी नीड टू डिस्कस दैट एज वेल। क्योंकि जब तक आप बताओगे नहीं कि उसका इफेक्ट क्या आ रहा है, ठीक है पोल्यूशन हो रहा है अच्छी बात है, लेकिन अगर आप बताओगे नहीं कि उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है, तब तक इट विल नॉट बिकम अ सीवियर थिंग, कि अच्छा दिस इज द रीजन व्हाई पीपल आर सफरिंग। सो यू नीड टू टेल इफेक्ट एज वेल, कि अच्छा अगर इतना सारा पोल्यूशन है, कॉजेज भी पता चल गए, एंड हाउ इट इज इफेक्टिंग पीपल, हाउ इट इज इफेक्टिंग एनवायरमेंट, हाउ हार्मफुल इट इज, तब तक पता नहीं चलेगा व्हाट इज द सिवियरिटी ऑफ द थिंग। All right, students. So, body में you got to know that we have discussed features, we have discussed causes, effects, सारी चीजें discuss कर ली, ठीक है, कि भाई क्या problem है, क्यों हो रहा है, उसका effect क्या आ रहा है। Then don't you think that we need to provide the solution as well? भाई हमने समस्या डिस्कस कर ली, उसके कॉजेज डिस्कस कर लिए, उसका इफेक्ट क्या जा रहा है, तो भाई समाधान भी तो हम ही देंगे, राइट। बिना समाधान के, बिना सोल्यूशन के discussion is not completed, right? So the last thing that you will provide in your body is the solution. So quickly, let's recall. Body में we are going to give features, ठीक है, we are going to give cause, we are going to get effect, and last में we are going to provide remedy or solution. Clear? Okay, now students, there is a lovely approach that you can use in a GD. And if you are using this approach, then of course, uh, you have all the chances to win, to get shortlisted in the GD. ठीक है, तो क्या है ये अप्रोच, समझते हैं। There is a word called PrEP. PrEP is an acronym. PrEP हमारा एक acronym है that stands for put forth a point, reason a point, example point, put forth another point. अब इसे कैसे याद रखना है, ये याद रखिए, कि आपको लगता है कि हम जीडी में क्या करें, ठीक है। आप एक वर्ड याद रखिए, दैट इज प्रेप, ठीक है। प्रेप सबको याद रहता है, ठीक है। प्रेप में पी का वर्ड है पुट फोर्थ अ पॉइंट। फोर्थ का मतलब होता है आगे। बैक एंड फोर्थ आपने पढ़ा था ना, बैक एंड फोर्थ ऑसिलेटिंग मोशन होता है। सिमिलरली पुट फोर्थ अ पॉइंट, आप एक पॉइंट रखिए आगे, ठीक है। फिर पॉइंट रखना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, देर इज आर। आर का मतलब है रीजन अ पॉइंट। जो भी पॉइंट आपने बोला, फॉर दैट यू नीड टू प्रोवाइड अ वैलिड रीजन, that what is the reason behind it, what is the reasoning behind whatever you are saying, so you need to give a reason as well. मैंने कहा कि एयर पोल्यूशन इज अ प्राइम thing to discuss these days. Air pollution is a prime thing to discuss these days. ये मेरा पॉइंट है। देन आई नीड टू गिव अ रीजन एज वेल, क्यों, मुझे रीजन देना पड़ेगा व्हाई इट इज अ प्राइम थिंग, और व्हाई इट इज बिकमिंग समथिंग ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस। क्योंकि एयर पोल्यूशन इज कॉजिंग अ लॉट ऑफ डैमेज टू द इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट में हम भी आते हैं, वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट। देर आर पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ डेडली डिजीजेस, ठीक है। And there are animals, there are other species as well who are suffering because of that. So this is the reason that I'm saying that air pollution is of prime importance, or air pollution is something which needs to be discussed at priority, ठीक है। Then E stands for example. I need to quote an example as well, कि मुझे क्यों लग रहा है कि air pollution is something which we need to take care of at priority, on priority। क्यों, मैं एक एग्जाम्पल बताऊंगी कि I have read in newspaper that as per the resources, or as per the sources, in year so and so, this was the ratio of um, depletion of forest, or there was a news that these species are endangered, ठीक है। और आई एम गोइंग टू गिव दैट एज पर द न्यूज, these many people, or this percentage of people are suffering from chronic lung diseases, and air pollution is something which is responsible for it. So मैंने क्या करा, मैंने अपना एक point दिया,
उस पॉइंट को मैंने रीजन करा, ठीक है, और उसको मैंने बैक करा एक एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। सो दिस इज वन थिंग। देन P stands for put forth another point। अब ऐसा नहीं है कि आपने जीडी में एक पॉइंट बोल दिया, रीजन बता दिया, एग्जाम्पल दे दिया, दैट इज इनफ। दैट इज नॉट इनफ। If you have to make your presence felt in a GD, if you have to make your presence felt and you want that the observer should notice you, ठीक है, इसके लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड स्पीक एटलीस्ट 3 to 4 times फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ 25 to 30 seconds। ठीक है, अगर आप इतना बोल रहे हो, ओनली देन द ऑब्जर्वर विल बी एबल टू ऑब्जर्व यू, विल बी एबल टू नोटिस यू, और आप शॉर्टलिस्ट हो सकते हो। ठीक है, सो रिमेंबर दिस अप्रोच कि हमें ऐसा नहीं एक ही पॉइंट देना है, हम प्रेप अप्रोच के अकॉर्डिंग हमें एक पॉइंट बोलना है। वॉट एवर पॉइंट आई एम सीइंग, आई एम गोइंग टू गिव अ रीजन बिहाइंड दैट कि व्हाई इट इज हैपनिंग सो, व्हाई इट इज सेट सो, एंड टू मेक अ पॉइंट मोर क्लियर। ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, हम एग्जाम्पल क्यों देते हैं? एग्जाम्पल हम सिर्फ इसलिए देते हैं सो दैट द पीपल हु आर लिसनिंग टू अस और द पीपल हु आर रीडिंग और वॉट एवर, दे आर एबल टू अंडरस्टैंड अस बेटर। अगर आपको याद हो, हमें बचपन में पढ़ाया गया था इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, सेडिमेंटेशन, राइट? मैम हमें सबकी डेफिनेशन लिखाती थी। डू यू थिंक कि वो पॉसिबल हो पाता, हमें वो चीजें समझ में आती अगर हमें कोई एग्जाम्पल ना दिया जाता? हमें हर डेफिनेशन के बाद एक एग्जाम्पल दिया जाता था। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैम ने समझाया कि ऑल राइट, टेक अ ग्लास, पुट सम आइस क्यूब, ठीक है, और ग्लास के बाहर वेपर्स फॉर्म होते हैं। तो हमें एग्जाम्पल दिया जाता था टू मेक द पॉइंट क्लियर। सेम वे, वॉट एवर पॉइंट यू आर प्रेजेंटिंग, वॉट एवर रीजन यू आर गिविंग एन एग्जाम्पल जस्ट टू मेक योर पॉइंट मोर क्लियर टू द पीपल। ठीक है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एग्जाम्पल नहीं दे रहे हो, देन यू आर एक्चुअली losing that opportunity to make the point clear to your audience, and at the same time they will not feel that yes you have said something। ठीक है, तो वो एक impression डालने के लिए, वो एक long lasting चीज impression डालने के लिए कि yes the listeners have actually understood my point and accepted my point, it is very important that I give some example। ठीक है, और एक पॉइंट बताने से कुछ नहीं होता है, यू नीड टू गिव अनदर पॉइंट एज वेल। और ऐसा मैंने नहीं कहा कि उसी टाइम पर देना है, लेट सम अदर पर्सन स्पीक एंड मे बी नेक्स्ट टाइम आप एक दूसरा पॉइंट लेकर आओ। ठीक है, बट दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू मेक योर इंप्रेशन ऑन द ग्रुप एज वेल एज टू द मॉडरेटर और द ऑब्जर्वर हु इज गिविंग यू द पॉइंट्स। ठीक है, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, यू हैव स्टार्टेड वेल, आपने इंट्रोडक्शन दिया, देन आपने जो उसका बॉडी का पार्ट आपने सब अच्छे से बोला, अच्छे से प्रिपेयर करा, आपको प्रेप अप्रोच पता है। ठीक है, नाउ इट इज रियली इंपॉर्टेंट टू कंक्लूड अ डिस्कशन वेल। ऑफन टाइम्स व्हाट हैपेंस कि स्टूडेंट्स डू नॉट टेक दिस सीरियसली, उनको लगता है कि ठीक है वी हैव पार्टिसिपेटेड वेल इन अ जीडी, आई हैव स्पोकन वेल, बट लेट मी टेल यू, if you are concluding, जैसे कि मैंने बताया था कि इंट्रोडक्शन में if a person is initiating the discussion, if the person is introducing, उसको ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। इन द सेम मैनर इफ समवन इज कंक्लूडिंग द डिस्कशन, देन ऑल्सो यू गेट गुड पॉइंट्स। ठीक है, सो डिस्कशन का जो कंक्लूजन, जो डिस्कशन का कंक्लूजन है उसको हमें इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, एंड आई विल टेल यू दैट व्हाट ऑल थिंग्स यू नीड टू कीप इन माइंड व्हाइल यू आर कंक्लूडिंग। सबसे पहले तो जब भी आप कंक्लूड करने जा रहे हो, ठीक है, तो कंक्लूजन का मतलब आप ये समझ लो दैट हियर यू डू नॉट हैव टू इंट्रोड्यूस एनी न्यू पॉइंट। हम कभी भी, चाहे हम ऐसे राइटिंग करें या फिर हम कोई स्पोकन एक्टिविटी करें, हम ग्रुप डिस्कशन करें या एक्सटेम्परी करें, स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर कंक्लूजन का मतलब सिर्फ इतना होता है दैट वी आर समराइजिंग वॉट एवर वॉज डन, वी आर जस्ट समराइजिंग दैट। सो नेवर एवर इंक्लूड एनी न्यू पॉइंट इन अ कंक्लूजन। ठीक है, नाउ three things you have to remember while you are concluding a discussion. Number one, it should have a concluding phrase। अब concluding phrase क्या होता है हमारा? Concluding phrases वो phrases होते हैं जिनको सुनकर हमारे listeners या हमारी audience पता लगा सके कि yes now I am about to finish the topic। ठीक है, so you can simply say all in all or at last, last but not the least। ये सारे phrases आप कुछ भी use कर सकते हो एक कंक्लूजन को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी डिस्कशन हुआ था सो फार आप उसको समराइज करोगे दैट इट वाज अ हेल्दी डिस्कशन, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स हैव पार्टिसिपेटेड वेल एंड ऑल ऑफ देम केम विद डिफरेंट पॉइंट्स, डिफरेंट ओपिनियन। हाउएवर
after seeing the pros and cons of the particular thing, we come to this solution or we come to this conclusion. आप वो बताओगे, ठीक है? And then of course you can add some future hope, recommendation or suggestion from yourself that you need to do. So तीन चीजें आपको याद रखनी है whenever you are concluding a discussion. So students, today we have learned about what a GD is, why a GD is conducted and the different types of GD. ठीक है? And उसके बाद we have learned that what is the strategy that we need to follow. We know how to introduce, we know what we all have to say in the body of the discussion, and we know what we have to say in conclusion. So do remember to follow this prep approach. अगर आपने prep approach follow करी है, ठीक है, and you have used all those things which were discussed right now, nobody can stop you in getting shortlisted. ठीक है? एंड इतना ही नहीं, ये तो मेरा बस स्टार्टिंग का था, ठीक है? इसके आगे वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम कौन से वो फ्रेजेस यूज करते हैं, ठीक है, टू स्टार्ट, टू इंटरवीन, ठीक है, बीच में आने के लिए, एंड टू एक्ट लाइक अ लीडर, ठीक है, एंड टू कंक्लूड. सो आई विल बी डिस्कसिंग ऑल दोज फ्रेजेस, आई विल बी डिस्कसिंग दोज टेक्निक्स दैट यू हैव टू फॉलो इन अ ग्रुप डिस्कशन and you can win it easily. So students, again I'm saying things will not happen immediately, it will happen slowly, gradually. You need to learn these things, and सिर्फ learn करने से मतलब नहीं है. Whenever you are given an opportunity in a class or maybe a competition is conducted, try to participate in that GD. And let me tell you, if you are stopping yourself only because of English, so I'll say English is secondary. Primary thing in a discussion is your knowledge. If you know about something, if you have good knowledge and you have a broken English, that is fine. ठीक है, लेकिन अगर आप पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हो, ठीक है, सिर्फ ये समझ के कि नहीं मुझको इंग्लिश नहीं आता है या मेरे पास नॉलेज नहीं है, then it is actually not going to work. You have to start from somewhere, and from somewhere at some point of time. So today is the best time. Today is the best time, and you have to take a decision that you will participate and you are going to get shortlisted in a GD. So do watch this video, okay, and refer to other friends who are struggling with GD. Do watch this video, and do watch my next video which is going to come soon. उसमें I'll be telling you about the techniques and I'll be discussing the phrases. अगर आप वो phrases use कर रहे हो, nobody can stop you in winning that discussion. So with this, I want to take a goodbye from you people. I'll meet you people very soon. Till then, keep working hard, keep learning, and keep a target that you are going to become a better version of yourself. Take care. Bye bye.